है रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, हाय, मैं जॉर्ज इब्राहिम। वेलकम टू आईवे कॉन्वर्सेशंस। आज हमारा मेहमान है, इस बार दो मेहमान हैं, दोनों they form a team and they are video bloggers. It's a new concept as far as I'm concerned. Sudhanshu Khurana and Simran Chawla. Welcome. Thank you so much, sir. We are glad to be on the show. हम शुरू करेंगे। ये वीडियो ब्लॉगिंग, हम लोग सब ब्लॉगिंग के बारे में सुना है, कई लोग हैं जो ब्लॉग्स लिखते हैं। ये वीडियो ब्लॉगिंग, हालांकि द टर्म सजेस्ट समथिंग, बट maybe Sudhanshu, would you like to tell us what video blogging is all about? In terms of video blogging, basically आप YouTube पे जनरली जैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर देयर इज़ अ नीश, स्पेसिफिक टाइप ऑफ नीश, राइट? सो वीडियो ब्लॉगिंग का मेन मोटो ये रहता है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप का एक व्लॉग बना रहे हो। जैसे अगर हम ब्लॉग लिखते हैं उसमें हम कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट्स समझाते हैं, सुनाते हैं, हमारी जर्नी से गो थ्रू कराते हैं, राइट? सो सिमिलरली दिस इज़ अ वीडियो ब्लॉगिंग जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जगह या फिर एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ, व्यूअर्स के साथ। इंटरेस्टिंग। सिमरन, आप लोग मिल के ये वीडियो ब्लॉगिंग करते हैं, तो आप लोगों का ये शुरुआत कैसे हुआ, ये आइडिया कैसे आया, और आपका पहला वीडियो ब्लॉग क्या था? हम लोग बहुत शुरुआत से ही ऐसे जाते थे, रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह विजिट करते थे, अलग अलग जगहें एक्सप्लोर करना हम दोनों का पसंद था। तो उस टाइम पे हमें लगा कि क्यों ना, अगर हम जा ही रहे हैं तो इनकी वीडियोस क्यों ना बनाई जाए। तो तब हमने ये वीडियोस बनानी शुरू करी। तो जो पहला रेस्टोरेंट हमने कवर किया था, पहला कैफे हमने कवर किया था, दैट वाज डिगिन कैफे, एंड सीपी में वो बिल्कुल नया खुला था। तो हमने उस टाइम पे वो कवर किया। बट उस टाइम पे ये होता था कि हम जाते थे तो वीडियोस बनाते थे, बट अब हमारा ये हो गया कि हम वीडियोस बनाने के लिए जाते हैं। तो मतलब द ट्रांजिशन हैज नाउ हैपेंड। मतलब पहले होता था कि जो जगह जा रहे हैं वो बस उसकी वीडियो बना ली, बट अब हम जगहें ढूंढ के सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां जाते हैं। तो इट्स लाइक मतलब आवर जर्नी हैज बीन सो गुड इन दैट, एंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा आया, व्यूअर्स से इतना प्यार मिला, तो it feels so good. तो ये डिगिन का अनुभव क्या था? ओके, सो टू बी ऑनेस्ट, उसके अंदर ना हमारा थोड़ा सा ऐसे रहता था कि हम ऐसे स्टोरी लाइन बनाएंगे। मतलब कि जैसे वेटिंग चल रही है, देन वी आर सिटिंग आउटसाइड वेटिंग इन द सेंट्रल पार्क, कि वो कब वेटिंग खत्म होगी, आई एम टॉकिंग टू माई मॉम। तो इस तरह से ना उसका एक स्टोरी लाइन हमने उस वीडियो ब्लॉग में बनाई थी। मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी बेसिक वीडियो, वेरी मतलब जैसे हमें कुछ नहीं पता था उस टाइम पे कि कैसे कैफे का एम्बियंस दिखाना है, कैसे फूड दिखाना है, फूड का क्या रिव्यू करना है। तो मतलब ओवरऑल ना इट वाज अ वेरी बेसिक वीडियो, बट व्हेन वी केप्ट ऑन गोइंग, व्हेन वी अंडरस्टूड, तो धीरे धीरे जैसे फूड का रिव्यू थोड़ा बेटर करना शुरू किया। अदरवाइज पहले मैं सिर्फ इतना बोलती थी कि इट्स वेरी टेस्टी, इट्स वेरी नाइस। तो मतलब वो ना लोगों को ये नहीं चाहिए होता है कि यार टेस्टी है या नहीं है, पीपल वांट कि उसका एग्जैक्ट टेस्ट कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट, मतलब स्पाइसी है, स्वीट है, सॉल्टी है, चीजी है, किस तरह से है। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आता रहा, एंड देन मतलब आवर फर्स्ट वीडियो, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई नाउ वॉच इट, इट फील्स सो, मतलब कि यार हमने ये क्या बनाया था। मतलब इट वाज लाइक कुछ भी नहीं था वो, इन टर्म्स ऑफ what we have learned over the time, and we are trying to even grow now, and उसमें और इम्प्रूवमेंट्स हम करना चाहते हैं अपनी वीडियोस में। तो आई थिंक द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू दिस शो, द फीडबैक वुड बी रियली रियली अप्रिशिएटेड।
जाहिर है कि शुरुआत इज नॉर्मली अ लर्निंग स्टेज Yes, एंड right. यू इवॉल्व। तो Yeah. मैं जानना चाहूंगा कि आप दोनों के पार्टनरशिप कैसे हुआ। Okay, so actually, हम लोग मिले थे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड आर के पुरम में। आई वाज डूइंग द कंप्यूटर कोर्स, सुधांशु वाज डूइंग द कंप्यूटर कोर्स, बट उस टाइम पे मतलब इट वाज लाइक कि बस हाय हेलो हुई, एंड देन we don't used to talk much. Then I got busy with my college, he got busy with his school and everything. But उसके बाद when my college was over, his school was over, we met again, and it was like we during weekends we used to go to places, go to cafes and restaurants. तो उस time पे we thought to kind of start videos. सो इस तरह से पहले हमने वैसे इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट डालना शुरू किया था, बट इंस्टाग्राम पे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला उतना, क्योंकि इंस्टाग्राम इज मोर अबाउट विजुअल्स एंड how you make the content look that much attractive, then only people are hooked to your content. बट जो फिर हमें यूट्यूब समझ में आया, क्योंकि यूट्यूब में ये है कि यू डू मोर टॉकिंग, एंड टॉकिंग के साथ साथ विजुअल्स भी होने चाहिए। आई एग्री टू दैट, बट देन इंस्टाग्राम में मेनली विजुअल्स होते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेट एंड वी गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट with Instagram first, but then we switched to YouTube mostly then. If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 18005320 469. The number is 18005320 469. I understand, Sudhanshu, you are also visually impaired. You have macular degeneration and low vision. So, and you are the technology person here in terms of this production. You do the shooting and the editing and so on. So, how did you get interested in this, and how do you actually manage the technology? I'm actually partially blind, and whatever I am able to see, I try to make up onto that. And in terms of videography, cinematography, I took inspirations from different movie shots. Actually, I used to watch a lot of movies and all. And in terms of audio, Simran is a really good orator. She has been an RJ, and she knows that how to talk in terms of in front of a camera or a mic. So while we were starting, Simran was the one who took a lead in terms of providing an audio description towards the video, and I was actually learning to do the filming and all. And in terms of video editing, I prefer it on a mobile device, because the thing is, through a mobile, it's also portable, and another thing is that I can easily magnify and look into the color corrections or the frames itself. That makes it easy for me in terms of dealing in terms of my macular degeneration. And yeah, and in terms of the journey part itself, as Simran has mentioned, um, basically we started talent years as well during the lockdown period. And we it was our online talent hunt. And the thing was that we used to conduct these talent hunts, and that made a strong coordination in between us. And then afterwards we started to look at more opportunities that which we can grow on. And initially, as Simran has mentioned, that we started on from Instagram and then moved towards YouTube. So there was a long learning curve before this YouTube journey as well. ये जो आपका जो YouTube चैनल है उसका नाम क्या है और उसका URL क्या है? आई एम श्योर और listeners would like to know that.
या श्योर। सो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सिमरन चावला व्लॉग्स। सो एक्चुअली हम दोनों इस टीम में हैं, बट वी इनिशियली स्टार्टेड विद दिस नेम, एंड फिर वो उतना ज्यादा मतलब जैसे चैनल चल गया तो वी डिडंट चेंज द नेम। सो द नेम ऑफ द चैनल इज सिमरन चावला व्लॉग्स, एंड so the handle, YouTube handle is @Simran Chawla. So if people will search for @Simran Chawla, you all can find it out. Sudhanshu, you mentioned talent hunt. That's something new that has cropped up. I didn't know about this till just now. So ये talent hunt के बारे में थोड़ा बताइए. So it was an online talent hunt, and Simran, as you all might be aware, that Simran has been a beauty pageant winner, Princess India, and she basically she was having an interest in terms of providing a stage during the lockdown period to people who are showcasing their talent. So हमने फिर बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, थोड़ा सोचा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो हमने कहा कि वाई डोंट वी यूज सोशल मीडिया पे टैलेंट हंट्स करे जा सकते हैं, एक वर्चुअल टैलेंट हंट वी शुड प्रोवाइड। और उसके अंदर फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड टू इंट्रोड्यूस जजेस, लोगों को हमने रीच करा, एक ओवरऑल मतलब पूरा मतलब ईमेल्स कैसे करें, लोगों को रीच आउट कैसे करें, और पूरा मतलब ग्रो कैसे करें, वो पूरा एक लर्निंग कर्व था और बहुत ज़्यादा इंटेंस था। लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी आए, नेगेटिव भी आए, मतलब एक ओवरऑल मिक्स्ड था, बट लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा अच्छा था उसका। तो सिमरन, what was the kind of talent? किस तरह के talent को आप खोज रहे थे? What were the kind of things that people were coming up with? सो वी डिडंट हैव एनी कैटेगरीज एज सच। हमें ये था कि जो भी आप टैलेंट दिखाना चाहते हो, जो भी मतलब इट कैन बी सिंगिंग, डांसिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, पोइट्री, या जैसे किसी ने तो मुझे आई रिमेम्बर किसी ने ऐसे रूबिक्स क्यूब को लाइक विद इन अ मिनट सॉल्व करके दिखाया था। तो मतलब टैलेंट इज टैलेंट, तो हमने उसके अंदर कुछ भी कैटेगरी नहीं रखी थी। इट वाज ओपन टू ऑल, एवरीवन, इंक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, पीपल विदाउट डिसेबिलिटीज। Everyone was welcome, every talent was welcome, and we were actually overwhelmed with the response because पहले ही जो हमने राउंड करा था उसके अंदर we had got around 220 entries. जब सुधांशु बात कर रहा था तो उन्होंने जिक्र किया कि that you have been an RJ. तो ये RJ का आपका इनिंग्स जो था, what was, why don't you tell us a little bit about that? ओके, सो आरजे में मैं बहुत स्टार्टिंग से ही इंटरेस्टेड थी बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई लव टॉकिंग। तो व्हेन आई वेंट टू दिस प्रिंसेस इंडिया का फर्स्ट राउंड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई, सो आई मेट ज्योति देयर, ज्योति मलिक, एंड शी वाज द प्रोग्राम मैनेजर एट रेडियो उड़ान। सो शी टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू जॉइन द रेडियो, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, आई रियली वांट टू डू दिस। तो उसके बाद मैंने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि कैसे मतलब किस टाइप के शोज करे जाएं, क्या करा जाए। तो आई केम अप विद दिस शो नेम्ड दिलों की दास्तां, वेयर आई यूज टू बेसिकली narrate the story in terms of in you know it's like audio movie, मतलब एक audio movie के format में when you're listening to it, you'll be able to you'll feel like you're watching a movie only. सो जैसे उसके अंदर बिल्कुल स्टोरी से रिलेटेबल सॉन्ग्स बीच में डालने, साउंड इफेक्ट्स फ्रॉम डोर ओपनिंग टू बहुत तेज से हवा चल रही है या बारिश आ रही है, तो मतलब वो एक एक्सपीरियंस देना कि आप मूवी ही देख रहे हो, एक ऑडियो मूवी सुन रहे हो। तो दैट काइंड ऑफ शो आई स्टार्टेड विच इज नेम्ड एज दिलों की दास्तां, एंड आई यूज्ड टू प्रेजेंट लव स्टोरीज इन दैट। So you were just narrating the story, modulating your voice, or you had other characters also? Yeah, no. So I was the one who was playing all the characters' roles, and I was the narrator as well. To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org
Sudhanshu, you, I believe, professionally work with a company called Randstad. Is that correct? Yeah, Randstad it is. तो आप इस कंपनी के साथ क्या करते हैं और ये कंपनी वैसे क्या करता है? Would you like to briefly share? Okay, so Randstad is a recruitment firm. Basically, we are the world's largest recruitment firm, and I'm into the ED&I department of India, and I report to the global head of ED&I, and mostly we are in terms of provide we provide third party consultations in terms of recruitment, and other than that we also are focusing in terms of inclusion, diversity and all. And I was also a part of the hiring batch, which they labeled as Randstad for all. And the company is now targeting towards hiring people with the disabilities, people from different marginalized communities, and we are also focusing towards helping other companies to do that as well. हमने प्रिंसेस डायना के बारे में सुना है। हमने अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि एक प्रिंसेस सिमरन भी है। सो आई बिलीव यू वन अ प्रिंसेस समथिंग कॉन्टेस्ट। Yes, right. So it was Princess व्हाट? India 2016-17. हाँ, It was a beauty pageant for visually impaired girls only. सो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? Yeah, sure. So, Princess India 2016-17 was basically it was a platform by Dr. Sameer Mansoori. He himself was visually impaired. He used to live in Mumbai, and unfortunately, I feel so bad to tell this that he's now no more with us. And matlab, he was the one actually who started this whole contest, and उसके बाद ये कभी हुआ ही नहीं। तो ये बेसिकली एक जैसे मिस इंडिया होता है, उनका मेन जो एम था वो यही था कि एक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के लिए स्पेशली करा जाए। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज वेरी नाइसली डन कि उसके अंदर मतलब पहले उन्होंने ऑनलाइन एंट्रीज मंगवाई थी। तो ऑनलाइन एंट्रीज में दे रिसीव्ड अराउंड 80+ एंट्रीज फ्रॉम पैन इंडिया। अभी आप ये विनीत सरायवाला का जो कंपनी है ए टिपिकल इंडिया, उसमें आप कार्यरत है। यस। तो ये ए टिपिकल एडवांटेज भी आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ संबंध रखते हैं, प्लस ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी कुछ काम करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज ए टिपिकल इंडिया एडवांटेज डू? Okay, so Atypical Advantage is basically the India's largest livelihood platform for people with disabilities, and इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे verticals हैं। तो नंबर वन इज हायरिंग वर्टिकल, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट्स में डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में डिफरेंट कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज को प्लेस कराते हैं। एंड नॉट जस्ट वाइट कॉलर, वी हैव ब्लू कॉलर हायरिंग्स एज वेल नाउ। So we have partnered with more than 300 corporates, and we have around 25,000 plus candidates with disabilities with us. And we have already placed more than 3,000 candidates with disabilities in different corporates. तो ये तो हायरिंग वर्टिकल रहा। इसके अलावा वी हैव एटिपिकल एक्सपीरियंसेस, उसके अंदर जैसे जो परफॉर्मर्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, सिंगर, डांसर, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो इनको भी हम लोग पेड शोज प्रोवाइड करते हैं, तो ताकि दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग द शोज एंड वट एवर दे आर इंटरेस्टेड इन। तो इस तरह से हम लोग एटिपिकल एक्सपीरियंसेस एक वर्टिकल है हमारा एटिपिकल एडवांटेज का। एक और वर्टिकल है दैट इज एटिपिकल आर्ट, और इसके अंदर हमारे पास विजुअल आर्टिस्ट होते हैं। तो विजुअल आर्टिस्ट में मतलब जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं, आर्ट वर्क्स बनाते हैं, वॉल न्यूरल्स बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास अलग अलग वेज हैं लाइवलीहुड अर्न करने के। एक तो होता है कि जैसे हम वेबसाइट पे पेंटिंग्स रजिस्टर करते हैं, तो जो सेल मतलब बाय करना चाहते हैं पेंटिंग्स, तो वो अपनी पेंटिंग्स को बेसिकली सेल करके लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अब काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे, पेपर फ्राई वगैरह है, टाटा पावर है, तो
इनका ये रहता है कि इनको अपने ऑफिसेज में वॉल न्यूरल्स बनाने होते हैं। तो आर्टिस्ट जो रहते हैं वो वहां पर जाकर वॉल न्यूरल्स बनाते हैं, एंड दिस इज हाउ दे अर्न। तो दीज आर द थ्री वर्टिकल्स, एंड वी हैव एटिपिकल वर्कशॉप्स ऑल्सो। एंड इसके अंदर हम लोग कॉर्पोरेट्स को सेंसिटाइज करते हैं, सिमुलेशन गेम्स हम लोग परफॉर्म करते हैं, ताकि they understand, they get sensitized, basically to spread awareness कि people with disabilities are no less than anyone else. Like we are as equal, we are as we are capable of doing everything that people without disabilities are capable of. हम किसी से So कम नहीं। yeah, yes, exactly. सो इसमें आप किस वर्टिकल के साथ काम करते हैं एंड व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस लाइक? Okay, so I am basically a part of supply team. उसके अंदर I head community partnerships. तो community partnerships में जैसे NGOs के साथ collaboration है, colleges के साथ collaboration है, government organizations के साथ collaborations है। तो these are the three things mainly, I work on mainly. And I've partnered with more than 500 NGOs across India. And we have around 180 plus colleges that we have partnered with. And so मतलब basically मेरा experience with Atypical Advantage has been really really great, because to be honest the culture here is very nice. Both of you are very young people today and so आपका भविष्य में व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ये जो वीडियो ब्लॉगिंग है, ये आप किस तरह से इसको आगे ले जाएंगे और आपका कुछ आगे का कोई कोलैबोरेटिव प्लान्स हैं जो आप लोग आगे करना चाहेंगे? आगे तो बस वही है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। एंड मतलब बेसिकली अभी तो जैसे हम सिर्फ दिल्ली के कैफेज और रेस्टोरेंट्स एक बहुत छोटी नीश को कवर कर रहे हैं, बट वी वांट कि हमें पूरे इंडिया, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमें सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स कवर करने हैं गोइंग फॉरवर्ड। नॉट जस्ट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स, वी ऑल्सो वांट टू कवर दीज रिजॉर्ट्स, होटल्स, and the places, the traveling places, the tourist places, all of these things we want to cover. So this is basically our vision and our mission. सुधांशु, आपका सोच क्या है? वी आर ऑन द सेम पेज। हमें एक एक्सपीरियंस, एक लार्जर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है ऑडियंस को, जिससे वो एक तरीके से वर्चुअल टूर कर पाए डिफरेंट प्लेसेस का हमारे थ्रू, एंड टू प्रोवाइड देम अ बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस एंड ऑल। और इसके अलावा मिलियंस एंड मिलियन सब्सक्राइबर्स तो है ही, एंड लोगों से काफ़ी अच्छा कनेक्ट बनना चाहिए बस। एक्सेलेंट, आप दोनों से बात करके हमें बहुत खुशी हुई एंड आई थिंक यू गाइस हैव बीन वेरी इनोवेटिव एंड you have explored territories which are considered by many as non-reachable. दोनों सुधांशु और सिमरन, आप ये अच्छा काम करते रहें, both professionally and as a passion। ये जो आप वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, wish you the very best. Thank you very much for being on this show. Thank you so much. We loved being on the show and loved talking to you, to all the listeners. Thank you so much. Thanks a lot for inviting us today. आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।